हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो। एंड आज हम इस स्ट्रीम के अंदर बातचीत करने वाले हैं अबाउट गेम डेवलपमेंट। आई होप मेरी ऑडियो सब प्रॉपरली आ रही हो। एंड सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग ने इतना सपोर्ट दिखाया और गेम जैम को सक्सेसफुल बनाया। हमारा गेम जैम हुआ था ये वीकेंड पे, और इस गेम जैम का टॉपिक था इन्फिनिटी। और काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे सबमिशंस आए, ऑलमोस्ट 30 एंट्रीज आई। तो यार वो गेम्स देख मैंने अब तक देखे तो है नहीं। मैं बहुत ही जल्द देखूंगा, उनको रिव्यू करूंगा और उनका सबका रिव्यू आपको मेरे चैनल निखिल मालनकर प्लेज पे मिलने वाला है। तो ये एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, निखिल मालनकर प्लेज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सबको हेलो बोल देता हूँ। सुयश हेलो, अफरीदी प्लेज हेलो, एटी गेमिंग हेलो, अब्दुल घनी हेलो, अमन दलावत हेलो, अरविंद बलच हेलो, हर्षित गेमिंग YH18 हेलो, यश हेलो, दीपक शाह हेलो, श्रेय पाटिल हेलो, स्पिरिचुअल मेडिटेशन हेलो और ग्राफी हेलो। तो इसके साथ दोस्तों मैं अभी स्ट्रीमिंग की शुरुआत कर देता हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं इस स्ट्रीम को 8 बजे अनस्ट्रीम के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस स्ट्रीम ऑन अनस्ट्रीम एट 8 PM। ठीक है? तो मैं जानता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बातचीत नहीं कर पाते, बिकॉज़ काफ़ी जो चैट की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से मैंने अनस्ट्रीम के ऊपर भी मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो मैंने ये पिन करके रख दिया है 8 बजे। जब मैं ये स्ट्रीम यहाँ से एंड करूँगा तो आइए अनस्ट्रीम पे आइए, वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ पे जो बातचीत है और गेम डेवलपमेंट की क्वेरीज़ है मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो चलिए यार, मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ बिना किसी देरी के, आप सभी लोगों के गेम डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को रिव्यू करने का। वेयर डिड यू स्टडी आफ्टर 12th? सो निखिल परमार, मैंने इंजीनियरिंग जॉइन की थी फ्रॉम ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। Can we create our own game engine? Mantra Jani, you can create your game engine, but it will be very very time consuming. काफी ज़्यादा time लग जाएगा. So if you want to do it, of course, do it by all means. But it's a very complicated task. It is even more difficult than creating a game, so to speak. अपडेट ऑफ गेम जैम। सो वन राइडर अपडेट ऑफ गेम जैम इज गेम जैम अभी खत्म हो चुका है। गेम जैम के अंदर मैंने 30 सबमिशंस देख लिए हैं। इनफैक्ट अगर आप गेम जैम का पेज जाके देखोगे तो ये देखो, ये गेम जैम का पेज है। कुछ 30 एंट्रीज आई है। तो मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कौन से सबमिशंस आए हैं। मैं बहुत ही जल्द वो रिव्यू करने वाला हूँ मेरे चैनल ऑन निखिल मालनकर प्लेस। तो निखिल मालनकर प्लेस को आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे रिव्यूज़ डालने वाला हूँ, दोज़ आर गोइंग टू गेट अपलोडेड ओवर हियर। ऑल गेम जैम एंट्रीज will be reviewed on निखिल मालनकर प्लेस। ओके, तो निखिल मालनकर प्लेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे आपको सारे रिव्यूज़ मिल जाएँगे। और एक और मेरे को क्या बोलना था दोस्तों, मैं ट्विटर के ऊपर आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हो ट्विटर के थ्रू, या फिर आज की तारीख में वो एक्स हो गया है, तो वहाँ पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये मेरी प्रोफाइल लिंक है, कनेक्ट विद मी ऑन ट्विटर। मुझे वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे मैं रेगुलरली ट्वीट्स करते रहता हूँ और कभी-कभार मैं वहाँ पे एएमए सेशंस भी होस्ट कर लूँगा। तो यार आ जाइए फटाफट ट्विटर के ऊपर फॉलो कर दीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स कर रहा हूँ मैं आजकल, तो यार आपको ट्वीट्स पढ़ के भी मज़ा आ जाएगा। ओके, sir, is it difficult to make a game as a solo game developer rather than working in a group? Bhargav, amazing question. I would say yes, it is a bit difficult because as a solo game developer आपको ना कि सिर्फ गेम की प्रोग्रामिंग करनी है, गेम का आर्ट भी देखना है, गेम का साउंड भी देखना है और टेस्टिंग भी करनी है। तो इट कैन बिकम अ लिटिल बिट एग्जॉस्टिव अगर आपके गेम का स्कोप बड़ा है। अगर आप एक बड़ा गेम बनाने चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली बीइंग अ सोलो गेम डेवलपर विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज़ you might run into exhaustion, or it might not be the best way to create a game, because जब आप गेम्स टीम के अंदर बनाते हो, टीम के साथ मिलके बनाते हो, वो गेम्स बनाने का मजा ही अलग रहता है। अब्दुल गनी पूछते हैं व्हाट पीसी स्पेक्स डू वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग इंडी गेम? सो अब्दुल गनी, आई थिंक रियली गुड पीसी स्पेक्स कैन बी any computer that runs Unity game engine, because Unity game engine requires you a mid-level graphic card,
that can be a very good configuration. Probably a 1650 Ti or 15 a 1650 Ti graphic card can be a good graphic card. Uh, I think in terms of RAM, I would say 8 to 16 GB would be decent. Memory space, I would recommend 1 TB, but अगर 500 GB भी है तो फिर भी ठीक है. तो ये एक बेसिक स्पेसिफिकेशंस आप समझ सकते हो. एंड वो फैंसी वाला एकदम आरजीबी वाला कैबिनेट की जरूरत नहीं है गेम डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है. एक बेसिक सा डब्बा कैबिनेट भी मिल जाए तो फिर भी चलेगा. ऐसा कोई जरूरत नहीं, कहीं पे लिखा नहीं है कि गेम डेवलपर के पास वो आरजीबी वाला कैबिनेट ही होना चाहिए. पता नहीं क्या ऑब्सेशन है. देखो मैं, मेरे पास है आरजीबी वाला, पर वो मैंने अफोर्ड कर पा रहा था इसलिए मैंने खरीदा, ठीक है. बट हम लोग के ऑफिस में काफी पावरफुल सिस्टम्स थे इसके पहले, और किसी में भी वो रंग बेरंगी लाइट वाला कैबिनेट नहीं था. शिवम गुप्ता, yes, I remember you. Welcome back to the stream. How to get client for game development? Yeah, getting clients for game development is pretty much straightforward. All you need to do is just create a profile, your own portfolio. So either it can be through a website or it can be in the form of various different websites. जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो फिर behance.net के ऊपर पोर्टफोलियो बना सकते हो, आर्ट स्टेशन के ऊपर डाल सकते हो. प्रोग्रामर हो तो खुद की एक गिटहब की प्रोफाइल होना जरूरी है. अगर एक गेम डिजाइनर हो तो खुद की एक वेबसाइट मेंटेन कर सकते हो. तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जैसे आप जिससे आपको खुद का पोर्टफोलियो आप बता सकते हो, और वही पोर्टफोलियो आप क्लाइंट्स को सामने पिच कर सकते हो. कुछ प्रोवन तरीके हैं. आप या तो अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, या फिर बहुत ही स्टार्ट कर रहे हो, एकदम जनरली स्टार्ट कर रहे हो तो फिर फाइवर इज ऑल्सो अ गुड वे. Can I keep my money in Google console wallets for more than a year? Interesting question. I don't know the answer. I think it Google console wallets. I'm not sure. I don't know the accurate answer to this. Project management software you use. So Kushal, we on our end we use Atlassian का Jira and Trello. तो इसका mix of combination of both. So Valorant खेलते हो आप? नहीं, मैं Valorant नहीं खेलता दोस्त. जय श्री राम भैया, स्ट्रीम एट नाइट ऑफ हॉगवर्ट्स. यस यस फॉर श्योर. हॉगवर्ट्स का नहीं, मैं मेरा ना अपना फोर्टनाइट का टच निकल गया है. काफी टाइम से मैंने फोर्टनाइट नहीं खेला है, तो प्रॉब्ली आई विल प्ले फोर्टनाइट टुनाइट. देवाशीष हेलो. सीओडी मोबाइल खेलते हो? नहीं नहीं, सीओडी मोबाइल में नहीं खेलता. What are the apps taught in Maya Academy? All apps. So Sony Singh, Maya Academy of Advanced Cinematics generally teaches you 3D softwares. So you can learn 3ds Max, Maya, Mudbox, Photoshop. But those are generally the softwares that they teach. How hard to make 2D games with 3D effects? Not that hard, Darshan. If you know a game engine, if you know how to create games, then it's not really that difficult. As you're currently leading a game development company and probably does hiring as well, what skills do you find rare in Indian game developers, and what skills do you think the industry demands? So, Mast Amma, the things that we look for in an individual is how, if firstly, definitely, do they know what they are doing? Okay. So, for example, if we are hiring a programmer, does he know programming? Does he or she know programming? Second part is how effective they are at communicating. Before I come to that, let me just thank Ecstatic Edits for 40 rupees super chat. Love how the game has improved so far. Keep it up. Thank you very very much, Ecstatic Edits, for the 40 rupees super chat. So coming back to the question now, what we look for in an individual is, we also know that probably they might not know everything. Okay, it is fine. अगर एक हम programmer को hire करते, for example, they might not know the most efficient ways to code, which is fine, but they at least should know basics of programming. वो उनका foundational knowledge should be clear. The second part that we look for is how effectively they are able to communicate with either us or the other team members. That is very critical, because when you are working on projects, it is the most essential skill that one can look for. और दोस्तों यहाँ पे so these are the things that we look for. One, how good they are with their foundational knowledge. Basic knowledge आता है, that is good enough. And second part is, are they good at communicating? Now that is very important. Communicating का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए. आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से तो भी ठीक है, हिंदी में बोलते हो हिंदी में बोलो, मराठी में बोलते हो मराठी में बोलो, बट
इफेक्टिवली आपके दिमाग में क्या है, वो आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अच्छा दोस्तों, 70 लोग देख रहे हैं, 35 लाइक्स हो गए हैं यार, बहुत नाइंसाफ़ी है। जो भी नया है एक बार यार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को पहली बार ढूँढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ। Nixon, how to join your studios? So you can join our studios if at all there are any opportunities. Suyash has also asked a similar question. So Suyash, first of all, thank you very much for 40 rupees super chat. Will Gameon offer any internships in coming times? So we might offer some internships in the future. We will announce that later on. In fact, ये जो game jam हमने organize किया था, that was to also look for some interns or freshers who can actually add value to our company. So yes, we will be offering internships in the coming times. And once again, Suyash, thank you very much for 40 rupees of chat. Okay. भाई साहब बहुत chats आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा read करूं. Should I learn only Blender if I'm a beginner and then move further on Unity to start game development? So as a beginner, yes, you can start Blender, but Blender and Unity are Blender is essentially, it can be used as a game engine, but it is primarily used as a 3D creation software, right? So what I would recommend is while you're learning Blender, just go ahead and also research a little bit about Unity game engine because that will be very much useful for you to learn. Okay, so why people underestimate game designers and think of artists and programmers are important? I personally think they forget a good game is fun game and not only good at graphics. So Geo guys, that's an excellent question that you have asked. Game designers generally are not regarded as much as they should be, and that's just because and that's not the case outside. Okay, this is generally only in India. इंडिया के अंदर ही ऐसा होता है कि गेम डिजाइनर्स का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, जबकि देखा जाना चाहिए। वो इस वजह से है क्योंकि लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे डोंट थिंक ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द गेम, मतलब कोर मैकेनिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर बाद में प्रोग्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। दैट इज़ द रीज़न व्हाई एंड आई थिंक इट इज़ रॉन्ग नॉट टू गिव देम द इम्पोर्टेंस दैट दे rightfully deserve. It is just that in India we are looking at do rather than think. Okay, but I'm pretty sure it will change as we go ahead in the future as well. Okay. But yeah, what about the game Ghost of Tsushima? Have you played it? You should also stream it if not. So spiritual meditation, I have actually played Ghost of Tsushima and in fact आज मैंने इस गेम के बारे में एक ट्वीट भी की थी। ये देखो यहाँ पे मैं आपको आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे लिंक। Ghost of Tsushima कहाँ पे क्या आज ही मैंने इसकी ये की थी। हाँ, ये देखो ये ट्वीट थी, ये ट्वीट थी। Can we use any URP assets in Android game? URP assets in Android game will I don't think you should use because they are not really optimized as far as I know. If you are able to find a way through which you can use them in an optimized way, why not? But I think at least as per my knowledge, that will be a bit difficult. Shivam, yeah, can you just repeat your question? I'm sorry, I skipped reading your question. Now I'm proceeding to work my game work and need your help. All the best, Cartoon World. Pulkit means how would you convince parents that gaming is a good career? So Pulkit means इसी exact topic के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बना के रखी है how to convince your parents for game development. मैं उस वीडियो को फाइंड आउट करके आपको लिंक भेजता हूँ। एक मिनट, ये देखो how to convince your parents for game development. अरे दिव्यांशु सारस्वत, थैंक यू वेरी मच फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। दिव्यांशु की रिक्वेस्ट है मुंबई गलीज इन चैट हो जाए बॉयज। चलो दोस्तों, मुंबई गलीज टाइप करो यार, स्पैम कर दो मुंबई गलीज मुंबई गलीज मुंबई गलीज, सब लोग टाइप कर दो मुंबई गलीज। ठीक है, एक बार हो जाए इतना यार। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्त ने अपने को 40 रुपीज सुपर चैट दी है, तो यार दिव्यांशु थैंक यू वेरी वेरी मच यार। सब लोग यार मुंबई गलीज टाइप करो एंड बढ़िया है यार, बढ़िया है।
ब्रो आज मैंने मुंबई इंडियंस का एक क्लिप देखा, कैन यू टेल मी इज इट रियल? सो यस, आई मीन ऑल द क्लिप्स दैट यू आर सीइंग अबाउट मुंबई इंडियंस ऑनलाइन आर वेरी मच रियल। हम लोग के काफ़ी सारे गेम प्ले क्लिप्स आ गए हैं ऑनलाइन। इनफैक्ट यू नो बहुत सारे क्लिप्स मैंने अपलोड भी नहीं किए थे। गेम्स गॉसिप के चैनल के थ्रू मैंने आयुष को प्रोवाइड किया था, तो उसने उसके थ्रू गेम्स गॉसिप के ऊपर पूरा स्प्रेड कर दिया। सो यस, यस, दोज़ गेम प्ले फुटेजेस आर रियल। Yoksh Gamer, thank you very, very much for 29 rupees super chat, yeah. Thank you very much. Thus, 3D character models and their garments are made differently. Shubham Parihar, yes. In fact, yes, they are made differently because when it comes to a character, there are multiple components. एक character बनने के पीछे ना पहले उसका character का sketch बनता है, एक 2D sketch बनता है। वो sketch बनने के बाद उसका 3D model बनता है। 3D model बनने के बाद उसका bone setup होता है। Bone setup is required for animation. Bone setup के बाद उसका rigging का जो process है, उसके बाद फिर उसको animate किया जाता है। और वो एक बार बेस मेश आपका क्रिएट हो गया, फिर उसके ऊपर क्लॉथ सिमुलेशन वो सब आता है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड यस, दोनों अलग-अलग बनते हैं। योक्ष गेमर, थैंक यू वन्स अगेन फॉर 29 रुपीज़ सुपर चैट यार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो 58 रुपीज़ हो गए हैं योक्ष गेमर आपकी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। व्हिच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर गेम डेवलपमेंट? हेलो, अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से C sharp currently is the best language for game development, and I'll tell you why. Because C sharp is used in Unity game engine, and Unity game engine is the most widely used game engine out there. And since वो language Unity में use होती है, that is the reason why I would say C sharp is best. However, to learn and get started, learning के लिए और शुरू करने के लिए मेरे हिसाब से C++ is good, regardless of where you are using it. Like you know, I think to get an understanding of how games or how programming is done, I would say C++ is a good option. Best marketplaces to publish PC games free. So Arkesh, H.io is a good marketplace to publish your PC games for free. Yes, Sunavne, when can I meet you, sir? So yes, I mean, yeah, I will be announcing my meetups soon. जब भी मैं meetups announce करूँगा, definitely आ जाओ. We can catch up. If you like game in Game Jam, then will you give any intern and will you review it? So Fabric Games, I am going to review all the games. In fact, मैं जो मेरे games review करने वाला हूँ, those I will be posting to Nikhil Malankar Plays. ये channel के ऊपर आपको सारे game के reviews मिल जाएंगे. Game review on Nikhil Malankar Plays. ठीक है? ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे and will we be providing internships to the people? It is a possibility. Yes, we may offer internships to people who are going to be a part of the game jam. मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए डेस्कटॉप का गेम डेवलपमेंट के लिए? डेस्कटॉप का मिनिमम रिक्वायरमेंट आई वुड से एक 8 जीबी रैम, डिसेंट ग्राफिक कार्ड, 4 जीबी ग्राफिक कार्ड, ample amount of space, 500 GB or 1 TB तक का space would be enough. That is about it. And based on your requirement, you can either become like improve it or decrease it. मैं वापस बोल देता हूँ, पीसी असेंबल करने के लिए वो एकदम आरजीबी वाला कैबिनेट लेने की जरूरत नहीं है। सब स्टैंडर्ड आपका कैबिनेट भी इनफ हो जाएगा। निमिषा मोदी, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, हाय निखिल, एनी एडवाइस फॉर फ्रेश अंडर ग्रेजुएट हु इज लुकिंग इनटू द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मैनेजमेंट एटसेट्रा? So, esports industry, if you're looking at esports industry, what I would recommend is try and get in touch with these major players in the market. Nordwin Gaming is leading the market right now, but apart from that, there are some other companies as well that are doing fairly well. So there's this company called Esports XO. You can get in touch with them. uh, I think when it comes to esports, what you're really looking at is two things. Either you get into the tournament organization part, or you get into the logistics part, wherein you can actually, you know, work with all these companies and get in touch with players. Player management can be one great aspect of esports industry. So there are multiple things that you can get in touch with. What I would recommend, Nimisha, a short way to get a proper understanding of this industry is to either get a fresher level position or an internship in any of these esports companies that are out there. So if I were to just give you a list of esports company in India, I'll just quickly look it up and I'll get back to you. Just a sec. ये एक website मेरे को मिलती है, top 10 best esports company in India. I'm just finding this link for you and
pasting it over here. Try and apply for a job at these companies. There are some really interesting companies over here. Nordwin Gaming है, Nazara Technologies है, Cobex Gaming है, LXG India, Sky Esports, AFK Gaming, Global Esports, eWar Games, Gamergy, Indian Gaming League, right? These can be some really good companies to work for. Or you can also get to the streaming side of it, wherein you can work for companies like Loco or Router, for that matter. So I hope this answer was comprehensive enough for you. And once again, thank you very very much for the 100 rupees super chat. सर ओपनिंग्स नहीं मिल रही 3D के लिए. सो महंत, हम लोग ने वेबसाइट के ऊपर हम लोग की जो ओपनिंग्स है, जॉब ओपनिंग्स है, वो अपडेट नहीं की है. वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी. सो वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप करनी है. एनी टिप्स? आई कांट फाइंड एनी सूटेबल कंपनी. निमिषा, यू आर मोस्ट वेलकम. सो वर्क फ्रॉम होम अगर करना है तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे. ऑल यू नीड टू डू इज एक लिस्ट बनाओ ऑफ एज मेनी गेम डेवलपमेंट कंपनीज एज यू कैन एंड स्टार्ट अप्लाइंग टू देम. धड़ाधड़ करके अप्लाई करना स्टार्ट करो. इंटर्नशिप इंटर्नशिप इंटर्नशिप, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो. Hala Madrid. Hey Nikhil, I'm an AR developer and my company name is Imagine AR Studio. I make AR filter for poster and merch. Can you tell about its future scope and how can I apply for companies to hire me? So future scope for AR filters for poster and merch can be looked at from a perspective and lens of marketing. A lot of people are actually thinking of marketing their brands in innovative ways using AR filters. That can be a great opportunity in the future, especially as we are moving towards an era wherein your holo आपका जो एप्पल का जो विजन प्रो डिवाइस है एंड ऐसे सारे AR डिवाइसेस जब कैप्चर करेंगे, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग टू सी इन द मार्केट. How can you get job? I mean, it's all a matter of making sure that you are visible out there. See, I'll just give you a general idea. If you want to get a job, just make sure that you are marketing yourself enough. See, when it comes to getting a job, how it works is some company looks at your profile, they like your profile, and based on your their understanding of your profile, they make you a job offer, right? एंड इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इनफ आउट देयर, अगर आप पोस्ट कर रहे हो, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर आप खुद की प्रोफाइल अपडेटेड रख रहे हो, खुद का एक पोर्टफोलियो मेंटेन कर रखा है आपने कहीं पे, सो पीपल विल एक्चुअली notice your profile a lot, and that is what matters. So getting a job is pretty much a very straightforward process. इसके बाद अनस्ट्रीम पे भी आओगे क्या? ब्लैक हार्ट, यस, इसके बाद मैं अनस्ट्रीम के ऊपर आने वाला हूँ. सो गाइस, after I am done with this, I am going to be streaming on Unstream. So come join me at 8 p.m. on Unstream. तो अभी मैं लगभग 3 मिनट में इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं अनस्ट्रीम के ऊपर लाइव जाने वाला हूँ. I made 1K rupees today. I created a 3D model for a game on Fiverr. Thanks to you for keeping every Indian in game creation field. Yeah, Cartoon Vault, that is amazing. I'm really happy for you that you earned 1,000 rupees by creating your own, creating a 3D model for a client on Fiverr. All the best to you. All the best. Does Unreal also use C#? No, Unreal Engine does not use C#. Unreal Engine uses C++. Piyush, hi Nikhil, RTX 3060 Ti with Intel i7. 12,700 मध्ये Unreal smooth चालेल का? Piyush, yes, I think Unreal Engine will run very smoothly on the configuration that you just mentioned. एकदम मक्खन सारखं चालेल. Divyanshu Tiwari, thank you, 100 rupees super chat के लिए. I'm in class 12th and I've been learning programming for 4 years. I'm planning to take Outscale's game development course. Should I go for it? Divyanshu, I mean, I have heard great positive things about Outscale, and I personally know Mayank Grover as well. So I think that class would be the Outscale's game development course will be really good for you. Certainly go for it. At least from the feedback that I've seen online from the students, there is a general positive feedback. I would recommend you to also get in touch with the folks. You can follow Mayank on LinkedIn. Mayank एक मिनट, मैं मयांक की प्रोफाइल आपको देता हूँ. मयांक ग्रोवर, ओके. Mayank keeps on posting frequently on LinkedIn, और वो जो है वो सक्सेस स्टोरीज भी डालते हैं अबाउट हिज स्टूडेंट्स एंड ऑल. सो आप उनके पोस्ट को फॉलो करके देख लीजिए. आई मीन, ही इज जस्ट एन अमेजिंग पर्सन.
जस्ट फॉलो हिज पोस्ट, वहाँ पे आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिल जाएगी। एंड वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स वो मेंशन करते हैं ना, एक बार आप उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनको पूछिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरे हिसाब से फॉर मी पर्सनली आई आई रियली लाइक व्हाट द फोक्स एट आउटस्केल आर डूइंग। वो लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द गेमिंग कम्युनिटी एंड यू नो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ गेम डेवलपर। सो आई वुड रिकमेंड येस फॉर श्योर गो फॉर इट। और दोस्तों यहाँ पे अभी 8:55 होने आ रहे हैं। नेक्स्ट 5-6 मिनट्स में मैं अनस्ट्रीम के ऊपर भी लाइव जाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ की स्ट्रीम तो मैं कर रहा हूँ एंड। मैं मिलता हूँ भी आपको अनस्ट्रीम के ऊपर, वहाँ पे आइए, वहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। सो चलिए दोस्तों, आइए अनस्ट्रीम के ऊपर। लिंक आपको पिन्ड चैट में मिल जाएगी। मैं एक और बार यहाँ पे आपको वो लिंक दे देता हूँ। आई अंडरस्टैंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं पूछ पा रहे होंगे। सो कम जॉइन मी ऑन अनस्ट्रीम इन 5 मिनट्स। ठीक है? ये लिंक है, आ जाइए। फिलहाल मैं यहाँ पे इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ गेम मेकिंग का, क्योंकि एकदम डुप्लीकेट करके उसने पूछा है। कैन वी मेक गेम विदाउट लर्निंग कोडिंग? सो गेम मेकिंग, येस, यू कैन मेक अ गेम विदाउट लर्निंग कोडिंग। काफ़ी सारे नो कोड सॉफ्टवेयर्स भी है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्ट 3 इज़ अ गेम इंजन दैट अलाउज यू टू मेक अ गेम विदाउट कोडिंग। Blueprints of C++, which one is easy? Piyush, Blueprints is easy, hands down. Blueprints is easy. ओके गाइस, मैं अभी मिल रहा हूँ आपको अनस्ट्रीम के ऊपर। चलिए मिलते हैं वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे गप्पे-शप्पे एंड गेम डेवलपमेंट के डाउट्स, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं, मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बाय बोलूँगा मेरी रात की स्ट्रीम में, जहाँ पे मैं निखिल मालनकर प्लेस पे स्ट्रीम करने वाला हूँ और गेम्स खेलने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने अनस्ट्रीम के ऊपर। आईओएस के ऊपर अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड और वेब ब्राउज़र के ऊपर अवेलेबल है। तो वेब ब्राउज़र के थ्रू आप आ सकते हो, पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। आईओएस के लिए अनस्ट्रीम फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आइए अनस्ट्रीम के ऊपर बात करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? चलो मैं मिलता हूँ आपको अनस्ट्रीम पे अभी। सी यू।